This conference will now be recorded. Basically start करते हैं. We have a one of important service called Azure Recovery Service Vault. Azure Recovery Service Vault. And a single Azure Recovery Service Vault contain 4 different options. The first one is related to the Azure Load Manage. Second one is related to the Azure Stack. Third is related to the Azure Stack HCI. And fourth one is related to the Azure on-premises. Azure 2 on-premises. So total we have a 4 different way, we have a 4 different method to configure the backup services. But before that, we should know about what exactly happened with the Azure Load Manage, Azure Stack, Azure Stack HCI, and why we need to use our last step like as Azure to on-premises. This is our responsibility. We should know about each and everything related to the Azure Recovery Service Vault. इसमें से जितने भी ऑप्शन है उन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे and we'll try to manage the practical as well. But before that, we should know about the gap or difference between these types of storage services. So in case of our storage services, पहले हम Azure Load पे बारे में बात कर लेते हैं. The meaning of Azure Load या Azure only की बात करें, whenever we create a storage account and उसमें हम Azure select करते हैं या Azure workload और Azure को select करते हैं, तो what happen in this case? We are able to configure the backup for our Azure virtual machine. We are able to configure the setup our backup for VM. Third, we can configure for storage, especially for file share. And if you establish a SAP server, SAP server over Azure portal, तो आप इन चारों में से किसी का भी बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं. This is the actual usage of our Azure load. Is it fine? Your service should be a part of Azure portal. आप बोल सकते हैं Azure load के केस में आपकी जो भी सर्विस आप परचेज कर रहे हैं should be a part of Azure portal. Now talk about the Azure Stack. If you proceed with Azure Stack, so Azure Stack is a basically combination of on-premises to cloud. अगर आप बैकअप के केस में या स्टोरेज के केस में बैकअप के केस में अगर आप Azure Stack इस्तेमाल करेंगे तो बेसिकली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ Azure services plus on premises resources. क्या क्या सर्विसेज आएंगी? लेट मी show you the options which is available in Azure Stack as well. Meanwhile, need to open our Azure portal and create one recovery service vault. We know that it's a part of our recovery service vault. Although we have already created multiple recovery service vault, यहाँ पे एक नया words तैयार कर लेते हैं. Select any resource group. So I want to put it in Azure AG 104. Type the name of your storage. Means recovery service vault का name यहाँ पे provide कर देते हैं. We just need to type any name. Training Walls 1988. I want to proceed in location of Central US. No need to do anything. Click OK and create.
We successfully proceeded for our Azure Storage Recovery Service Vault. Fine. So our storage account is ready to use. Need to open our vaults. Okay. Click backup, and we are talking about the options which is available in backup case. Azure, Azure Stack Hub, Azure Stack HCI, and last one is related to the on-premises. So we already understand about the concept of Azure, means the data, the services which is available on Azure, you want to take the backup. तो इसमें 4 से 5 services available है, like as a VM, file share, Azure Virtual Machine with SQL, SAP. Second, if you change the Stack Hub, the meaning of Stack Hub, ऐसी services जो Azure पे भी हो सकती हैं और ऑन प्रोमाइसेस के केस में भी हो सकती हैं, उनको हम एज ए Azure Stack Hub के नाम से जानते हैं. So if you want to take the backup of some file and folders which is running on premises, which is available in on premises computer, या Azure के किसी virtual machine पे आपने file folder को establish कर रखा है, तो आप स्टैक का इस्तेमाल करेंगे. SQL सर्वर Azure पोर्टल पे है या ऑन प्रोमाइसेस पे है, उनका बैकअप कॉन्फ़िगर करना है, तब भी आप स्टैक का इस्तेमाल करेंगे. Think about the another option. HCI is correlated to the selected hardware. HCI is basically, in this case, you must need to establish your resource on individual resources. You must need to implement your services to selected resources, like as a Dell का system है, HP का system है, या आपने Acer का server लगा रखा है on premises के case में, and you are planning to configure the backup, तो उस केस में HCI consider किया जाएगा. और लास्ट में ऑन प्रोमाइसेस है. ऑन प्रोमाइसेस के केस में लोकल कंप्यूटर पे अपने मल्टीपल सर्विसेज लाइक एज ए फाइल फोल्डर, वीएम ऑन हाइपरवाइजर, वीएम ऑन वर्चुअल मशीन, VMware, माइक्रोसॉफ्ट सिक्वल, शेयर पॉइंट, एक्सचेंज, सिस्टम स्टेट, बेयर मेटल, इन सभी का बैकअप अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो वी नीड टू प्रोसीड विद ऑन प्रोमाइसेस. We have already discussed about the Azure, so that's why I'm going to proceed with on-premises की. On-premises पे अगर आपके पास कोई फाइल या फोल्डर अवेलेबल है तो उसका बैकअप, या VM अवेलेबल है या सिस्टम स्टेट बैकअप है, तो आप किस तरीके से कॉन्फ़िगर करते हैं. लेट मी शो यू द कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू द बैकअप फ्रॉम on-premises to cloud, because most of organizations prefer to establish our backup with the help of Azure Recovery Service Vault. So let me know if you have any question related to the backup services. Means अभी जो concept हमने discuss किया है, इस पे कोई doubt या कोई question? नहीं, इस पे कोई डाउट नहीं सर. ठीक है. Do one thing, I'm just going to connect our on-premises machine. On-premises को connect कर लेते हैं ताकि हम backup को configure कर सकें. This is our on-premises system, on-premises Windows 10 operating system. I'm just going to configure the backup for our file and folder. किसी भी सर्विस के लिए हम यहाँ पे बैकअप कॉन्फ़िगर करने हैं. So what we need to do, open our Azure portal, and I'm going to show you the step to configure the backup of file folder जो on premises में available है. Select file and folder, click prepare infrastructure. So in case of prepare infrastructure, you need to download two important tools. One is a tool related to the software, and second is related to the words key, the key kind of credential that can approve our on-premises machine with Azure portal. तो हमें ये दोनों services अपने on-premises machine पे download करनी पड़ेगी. So for this particular task, I'm going to log in my Azure portal on Windows machine, ताकि यहाँ से हम directly download करके और install कर सकें. Open your recovery service vault, select your vaults that you created. Training vaults 1988, this is our vault's name. Select backup, and I want to take the backup of our on-premises resources, so need to change on-premises. किस चीज का बैकअप कॉन्फ़िगर करना है वो यहाँ से डिसाइड कर लेंगे. बेयर मेटल हो सकता है, सिस्टम स्टेट हो सकता है, SQL हो सकता है,
VMware virtualization हो सकता है या hypervisor virtualization हो सकता है, as per requirement you can proceed with it. But in our case, I'm just going to proceed with the file and folders. Click prepare infrastructure, and you should download agent for server or client. एक तो ये हमें डाउनलोड करना है, दूसरा ये कीज डाउनलोड करनी है, which is work just like a, you can say that it works just like a credential. Now we successfully downloaded both files, and now I'm just going to open it. मार्स एजेंट इसको बोलते हैं, और ये अपने पास कीज की डिटेल हो गई. लेट मी कॉपी एंड पेस्ट ऑन डेस्कटॉप. Our responsibility to install Mars agent. Just need to double click. Okay, so actually it's already registered with another portal or another, not portal, another account. So let me uninstall it and install it again. Microsoft Azure Recovery Service Agent, Mars agent. I'm just going to uninstall and then need to install it again because ये already software किसी दूसरे vault से connected है. Next, let's try to install it again. Next, do not use any kind of proxy. Just need to click next. Do not want to update. Next, and install. Now proceed to registration. You must need to register our on-premises machine. Proceed to registration, and it will redirect you on page of browse. So just need to browse your keys जो अभी हमने डाउनलोड की थी. डेस्कटॉप पे रखा है इसको हमने Azure Vaults के नाम से. Select your Vaults key, open. Next, you must need to use at least one password in case Vaults में कोई problem आ गई. If you want to secure it, so you just need to provide your own password. So I'm just going to generate it and save on our desktop. And finish. It will approve our on-premises machine and connect to our Azure recovery service vault that we created on Azure port.
Fine. So we successfully registered our on-premises machine to Azure portal. Just need to close it. And this is the Mars agent, Microsoft Azure Backup Recovery Service Vault agent that we install on-premises because we are planning to take the backup of our on-premises file and folder. लोकल के केस में जो भी फाइल फोल्डर है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम Azure Vault का इस्तेमाल करना चाहते हैं, Azure Recovery Service Vault का, तो उसके लिए हमें ये Mars agent लोकल सिस्टम पे इंस्टॉल करना पड़ेगा. Procedure, it's a really basic step that you need to use. Click on schedule backup. और schedule backup के केस में you need to provide the information about your file and folder जिसका आपको backup लेना है. तो हम same folder का backup configure करेंगे जो अभी हमने तैयार किया था to store our Mars agent data. Next, add item. This is the place जहाँ से आप data की location decide करेंगे. So our data available in desktop. C drive को select करेंगे and we need to open users. और जो भी यूजर आपने लॉगिन किया है, दिस वन इज द एडमिनिस्ट्रेटर, और जो फोल्डर का बैकअप आपको कॉन्फ़िगर करना है. सो आई वांट टू टेक द बैकअप ऑफ जो डेस्कटॉप पे है विच इज द Azure वर्ड्स के नाम से हमने बनाया था. जस्ट नीड टू चेक. यस, दिस वन इज अवर डेटा जिसका हम बैकअप लेते हैं. Azure वर्ड्स को सिलेक्ट किया, या और भी एक दो बैकअप हम कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, लाइक एज पासवर्ड का बैकअप क्रिएट करना चाहते हैं, PWD का बैकअप. दैट्स इट. Azure words and PWD. Next, no need to make any changes. Click next. The place where we can select the scheduling. यहाँ पे आपको एक टाइमिंग देनी पड़ेगी जब आप अपने किसी भी डेटा का बैकअप कॉन्फ़िगर करते हैं, because it's auto task. You can proceed with daily basis. You can proceed with weekly basis. It's fully depend upon you कि आप कौन कौन से दिन बैकअप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या आप डेली बैकअप लगाना चाहते हैं इवनिंग के टाइम पे, लाइक एज एट 7 PM इवनिंग पे डेली ये बैकअप कॉन्फ़िगर करेगा. इट्स अप टू यू. So what I'm going to do, I'm going to proceed with weekly, or weekly में I want to take the backup of our data only on Saturday. तो ये schedule ज़्यादातर कंपनी में यूज किया जाता है because you need to collect the information, collect the data, and after that take the backup. Next, no need to make any changes because we are planning to configure backup right now, so no need to make any changes. Select, click next, file and folder, types of backup, and finish. बैकअप के बाद हम जो भी डेटा है हमारा उसको हम डिलीट करेंगे and try to restore it by using the same tool. We successfully created the schedule for the backup, but we want to take the backup right now. तो schedule तो आएगा every Saturday evening 7 PM. तो हमें एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पे बैकअप नाउ. तो just need to click on backup now. Schedule the timing, जो भी by default टाइमिंग है वो schedule कर दो. And backup. As per the capacity of data ये थोड़ा सा टाइम लेगा.
In our case, I think our data capacity is approximately 45 MB के आसपास का डेटा है. तो once it's complete, we will move ourselves to desktop and delete the entire data. जो भी अपने पास जिसका भी हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया उसका उसको डिलीट करके चेक कर लेंगे. नाउ बैकअप कंप्लीटेड, बैकअप जॉब कंप्लीटेड. ये हमने मैनुअली प्रोसीड किया था बैकअप नाउ करके. अदरवाइज ये शेड्यूलिंग था, मींस बैकअप शेड्यूल था कि मींस एवरी वीकेंड पे हमने सेट किया था या डेली बेसिस पे सेट किया था. अकॉर्डिंग टू द शेड्यूल ये बैकअप कॉन्फ़िगर होता है. बट हमने अभी इमीडिएटली इसका प्रैक्टिकल देखने के लिए इमीडिएटली कॉन्फ़िगर किया है. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट द एंटायर डेटा. जो भी हमने वॉल्ट पे डेटा रख रखे हैं या पूरा का पूरा फोल्डर भी आप डिलीट कर सकते हैं, नॉट एन इशू. अनदर डेटा pwd के नाम से जो हमने बनाया था फोल्डर, उसको भी डिलीट कर देते हैं. एंड डिलीट फ्रॉम रिसाइकल बिन. We successfully deleted our data from desktop जिसका हमें बैकअप कॉन्फ़िगर करना था. और let me delete from recycle bin as well. राइट, इसको हम रिसाइकल बिन से भी डिलीट कर देते हैं. फाइन, सो वी सक्सेसफुली डिलीटेड द एंटायर डेटा. अब इसको रिस्टोर कराना है बाय यूजिंग द सेम टूल्स. इफ यू चेक एंड वेरीफाई बैक टू द रिकवरी सर्विस वॉल्ट, और यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो डेटा हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया है उसकी लिस्ट यहाँ पे दिख रही है नहीं. क्लिक ऑन बैकअप आइटम्स. अंडर द बैकअप आइटम वी कॉन्फ़िगर्ड the backup for our agent. This is a backup agent क्योंकि हमने on premises कॉन्फ़िगर किया था. Open it. It give you the complete information about your on premises computer. Right, this one is our on premises machine. ये जो हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया है उस सिस्टम की इंफॉर्मेशन, सी ड्राइव का बैकअप. सी ड्राइव में डेटा था हमारा और डेस्कटॉप का नेम ये मींस कंप्यूटर नेम ये टाइमिंग है. व्यू द डिटेल्स. It give you the complete information. Latest backup आपने कब कॉन्फ़िगर किया था, तो we have already configured the backup. डेटा भी डिलीट कर दिया है. Now talk about the restoring purpose. How we can configure the restore. Back to the on-premises machine. Mars agent को open करेंगे. Select your backup timing or date and click recover data. To this server, to another server. Yes, I want to configure. I want to take. I want to recover our system on the same computer. Next. इंडिविजुअल फाइल एंड फोल्डर, इंटायर वॉल्यूम, इट्स अप टू यू कि वो डेटा हमने वॉल्यूम पूरे के पूरे वॉल्यूम का बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है या पर्टिकुलर फोल्डर का. सो आई वांट टू प्रोसीड विद पर्टिकुलर फोल्डर. सेलेक्ट द रिस्टोर पॉइंट, जो भी हमने पॉइंट तैयार किया था. सी ड्राइव, दिस इज आवर लोकेशन ऑफ डेटा. ये अपने पास टाइमिंग थी, डेट था जब हमने बैकअप कॉन्फ़िगर किया. एंड क्लिक माउंट. It give you the entire information related to the data जिसका वो हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है.
Done. We successfully recover our data. Just need to click browse. It will redirect you on the page user, administrator, desktop एंड ये दोनों फाइल थे अपने पास. आप चाहो तो इसको मैनुअली कॉपी कर सकते हैं या फिर आप इनको अपने लोकेशन पे सेंड कर सकते हैं. एक तो ये है कि आप मैनुअली इसको कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं. ओके सॉरी एक्चुअली हम क्लोज कर दिए थे इसको. लेट मी चेक अनदर ऑप्शन. दिस सर्वर इंडिविजुअल फाइल एंड फोल्डर. ओके सो वी हैव अनदर ऑप्शन लाइक एज एक तो मैनुअली हम कॉपी पेस्ट कर सकते हैं या फिर उसी लोकेशन में जाना है तो वी नीड टू प्रोसीड विद वॉल्यूम. नेक्स्ट select the mount date. Next, this is original location or another location or alternate location. So I want to recover it to on original location. Desktop पे था तो desktop पे ही लाना चाहते हैं. Next, select your path, click recover and wait. Backup job completed successfully. I'm just going to close it and back to the desktop. Find your data जो हमने delete कर दिए थे. PWD and Azure Vaults. Both data are available. So this is all about to configure the recovery service vault for on-premises to Azure portal services. Is it fine? Yes, sir. ठीक है तो ये अपने पास टॉपिक हो गया रिलेटेड टू द रिकवरी सर्विस वॉल्ट. प्लीज गो थ्रू द टॉपिक्स दैट वी कंप्लीटेड. कोई क्वेश्चन है तो ठीक है डिस्कस कर लेते हैं. अदरवाइज नीड टू प्रोसीड विद अनदर टॉपिक. Right, so let's proceed. सॉरी. Let's proceed. Let's proceed with the next topic. Okay, so actually अभी as per the agenda of AG 104 ना चलो ये हम कर देते हैं क्लोज वॉल्ट्स का. मॉनिटरिंग पैनल ये इसमें ये नहीं हो पाया था राइट. नहीं, monitoring panel ने शुरू किया. ठीक है. these all are the small topics. So what I'm going to do ये topic and another part is related to the I think AKS right, cluster and AKS services. Yes, sir. ये दो टॉपिक हो गए अपने पास. और नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट एडी क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेंगे. तो एडी कंप्लीट करने के बाद एक क्लास में हम ये दोनों टॉपिक कवर कर लेंगे. क्लियर. Right, okay. बहुत ही sir. बेसिक सा कॉन्सेप्ट है एडी का. इफ यू हैव ऑन प्रीमाइसेस एडी इंफॉर्मेशन डेफिनेटली आपको चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी. व्हाट वी नीड टू डू एज पर द कंटेंट यूजर एंड ग्रुप अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट या बोल सकते हो उसको टेनेंट, group properties, device setting, bulk user operation, guest user account, AD join, SSPR, self-service password reset, custom role, about the resources, how we can provide the different resources for RBAC services, and Azure policy, Azure logs, Azure resource group, and subscription, costing, and management group. ये अपने पास टॉपिक है related to the AD. बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है बट यू मस्ट नीड टू नो अबाउट इट हाउ वी कैन यूटिलाइज इट. बट बिफोर इट स्टार्ट जस्ट वांटेड टू नो अबाउट हाउ मच यू कंफर्टेबल विद लोकल एडी. ऑन प्रीमाइसेस एडी कंफर्टेबल है. हाँ सर, थोड़ा काम किया है उसमें, मतलब यूजर क्रिएट करना और ग्रुप्स क्रिएट करना और पासवर्ड रीसेट्स एंड थिंग्स लाइक दैट. थोड़ा बहुत नॉलेज है सर. एडी इंस्टॉल करना
एडी इंस्टॉल नहीं सर, हमारे में ऑलरेडी सर्वर हमें पहले दे से दिए जाते थे जिसमें हम लॉगिन, हाँ, तो इंस्टॉल नहीं करा कभी। मैंने द यूसेज ऑफ ऑन प्रोमाइसेस एडी, यूजेस ऑफ ऑन प्रोमाइसेस एडी ऑन प्रेम सर, वो यूजर्स को क्रिएट करना, ग्रुप्स को क्रिएट करना, यूजर्स के पासवर्ड रीसेट करना, एंड बेसिकली एनीथिंग। by using सॉरी। same user by using the same user we are able to log in our client computer windows यस 7 है, यस इनको हम लॉग इन करा लेते हैं। इज इट करेक्ट? यस सर। Organizational unit also available in our AD group, also a part of AD, right? These all are the components of Active Directory on premises AD. So let me give you the complete information like as a gap between on premises AD to Azure Active Directory, because we cannot say that कि ये दोनों चीजें similar हैं, but we can say that both can perform the like as a kind of same task. ऑन प्रोमाइसेस एडी ही की तरह ये हमारा जो एज्योर एडी है ना, कहीं ना कहीं इसी तरीके से टास्क परफॉर्म करता है, बट इसका जो इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो फीचर्स थोड़ा सा ज्यादा है इन कंपेयर ऑफ आवर ऑन प्रोमाइसेस एडी। So let's try to understand about the gap between each other. First यस of सर। all, need to know about the usage of Active Directory services, on-premises AD services. उसके बाद फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे उसके अंदर के फीचर्स के बारे में। तो लेट मी डिवाइड इट इन टू डिफरेंट पार्ट। दिस इज अवर ऑन प्रेमाइसेस AD. Think about the Azure Active Directory services. Talk about the Azure AD services. So in case of on premises AD, we need to establish one domain machine, and we have a n number of client computers like as a based on Windows 7, Windows 10 or Windows 8. कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, and all systems are connected to each other with same network. And जब भी हम डोमेन बनाते हैं, you know that you need to provide the name with .com, class.com, training.com, organization name.com, like that. Means कोई भी नेम हो सकता है। सर्वर 2012 हो सकता है, 2016 हो सकता है, या कोई सा भी। This is our client operating system. Next, talk about the Azure AD. So as per the name suggests, in case of Azure Active Directory services, it is responsible to manage n number of portal, not only the Azure portal. Think about it. Azure AD responsible to control and manage lots of other Microsoft product like Office 365 के services को आप control कर सकते हैं with the help of Azure AD. Second, by using the same MS Intune को आप मैनेज कर सकते हैं, Microsoft Intune को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, यू कैन कंट्रोल योर AVD, Azure वर्चुअल डेस्कटॉप को आप कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। एंड लास्ट, अपने पास जो Azure AD है, Azure की सर्विसेज है, उनको तो मैनेज कर ही सकते। Single Azure portal able to single Azure Active Directory able to manage Office 365, Microsoft Intune, Azure Virtual Desktop, and Microsoft Azure services. So just wanted to know about how much you comfortable with uh, these. Not compatible. I hope you all of you are aware about these product of Microsoft. ये सभी Microsoft के ही product हैं। तो just wanted to know about the basic understanding है आपकी इन चारों services में। हाँ, बेसिक है सर। एवीडी का Like क्या फुल फॉर्म बताया सर आपने? Azure Virtual Desktop। हाँ हाँ, वर्चुअल डेस्कटॉप ये और VDI एज्योर। VDI का कॉन्सेप्ट है, VDI वाला। हाँ सर, हाँ हाँ, नहीं बेसिक पता है सर सबका। Cool. Office 365 क्लियर ही होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। What about Intune, Microsoft Intune? वो सर वो डिवाइस एनरोलमेंट करने के लिए और डिवाइसेस को बेसिकली कंपनी से जब एनरोल करते हैं तब इंट्यून यूज़ करते हैं। डिवाइसेस को मैनेज कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून से, किस डिवाइस को रिटायर करना है, किसे वाइप करना है, हाँ, कंप्लायंट है कि उनकी नहीं, वो सब चीज़ें। सिक्योरिटी के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक एज कि हाँ, उसके पासवर्ड को बिट लॉकर की इसको स्टोर करने के लिए, लाइक दैट। ये सारी यस सर्विसेज इंट्यून के थ्रू कर सकते हैं। MDM, राइट? यस सर, मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट, या
mobile device management. Fine. So let's talk about the usage of AD. Active Directory domain controller as Active Directory services both are database storage, means which is responsible to store information about our clients. So over Azure portal, how we can utilize it, because we are responsible to manage the services over Azure. But if we talk about the usage, तो इन सभी पार्ट में भी इनका यूज होता है, लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि Azure की सर्विसेज को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है. Is it correct? Yes, sir. Okay, let's start from very basic, like as try to understand about the concept. Use of Azure AD for Azure services. As an administrator, as we know that, for example, this is our Azure portal that we created by using a mail ID, और जब भी हम उस mail ID का इस्तेमाल करते हैं, which is considered as a root account. Is it correct? जो भी हम account का इस्तेमाल करके, जिस भी mail ID का इस्तेमाल करके हम अपने portal को login करते हैं, which is considered as a root account. और हमेशा administrator को जो access मिलता है, वो root account का ही access. Is it fine? Yes, sir. The gap between root account and another account, ये थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं. For example, you are a single person that's responsible to manage entire services. आप अकेले इस Azure portal की सारी सर्विसेज मैनेज कर रहे हैं. You are responsible to manage VMs. आप डेटाबेस मैनेज कर रहे हो. आप यहाँ पे जो भी स्टोरेज परचेज किया गया है, उस स्टोरेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, VNet की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मीन्स एवरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अकेले हैंडल कर रहे हो. नाउ इट्स रियली डिफिकल्ट 9 आवर्स की शिफ्ट में, 8 आवर की शिफ्ट में सभी टिकट्स को रिजॉल्व कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है. मीन्स so what you need to do, you need to hire some engineers, like as आपने कुछ engineers को hire कर लिए, 3 engineers को आपने hire कर लिए with like as they also know about the Azure services. ABC engineer आपने hire किया है, XYZ engineer आपने hire किया है, और आपने एक test engineer hire कर लिया है. Right, you are owner of this particular portal, means you have a rights to manage each and everything. आप subscription manage कर रहे हो, आप billing manage कर रहे हो, means you have a rights to manage each and every part. Now AD can help you. What you need to do, if you want to distribute your services, or if you want to distribute your subscription, you need to create a AD user. इनके नाम से हम क्या करेंगे, AD users तैयार करेंगे, एंड हर एक यूजर को एक यूनिक परमिशंस प्रोवाइड करेंगे. नॉट एंटायर, नॉट फुल राइट्स. पूरा राइट्स तो किसी भी यूजर को नहीं प्रोवाइड करना है. एबीसी गुड विद वर्चुअल मशीन, तो हम इसको वीएम की परमिशन दे देंगे. XYG ओके विद स्टोरेज पार्ट, ही नोज एवरीथिंग रिलेटेड टू द स्टोरेज. और टेस्ट यूजर जो है वो नेटवर्किंग में उसे अच्छा खासा आइडिया है. So what you need to do, you need to create an Active Directory user with different name, and with the help of RBAC service हम अपने इन यूजर्स को पर्टिकुलर परमिशंस प्रोवाइड करेंगे. VMs का दे दिया, स्टोरेज का पार्ट दे दिया, नेटवर्किंग का पार्ट दे दिया, और ये सभी यूजर हमारे इन सर्विसेज को सिर्फ और सिर्फ इसी सर्विस को देख पाएंगे, इन्हीं टास्क को परफॉर्म कर पाएंगे. अदर कोई एक्टिविटी ये इनके पास राइट्स नहीं रहेगा ये टास्क परफॉर्म करें. इससे क्या होगा, एडमिन के ऊपर से लोड डिवाइड होगा, मींस जो बर्डन था वो बर्डन डिवाइड होगा, और आप अपनी चीजों को आसानी से मैनेज कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. चलिए, आई एम गोइंग टू मूव आवरसेल्फ टू पोर्टल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द ऑप्शंस व्हिच इज अवेलेबल ऑन Azure Active Directory. और फिर उसके बाद इसमें हम देखते हैं कि कैसे यूजर्स वगैरह मैनेज किया जाता है. Open Azure Active Directory, which is available in security panel. Click AD, Azure AD.
although I have already created multiple user accounts. So let me check how many users are available. Multiple users account available. I'm going to remove all the users. Fine. So this is the panel जहाँ से हम users create करने वाले हैं. Just need to click new user. दूसरा option है अपने पास new guest user और तीसरा है bulk operations. So let me create a new user. Okay, so use any name, like I'm going to create with name of ABC. This is our on domain, means जो Azure portal ने हमें provide कर रखा है, which is associated with on Microsoft.com. Type करते हैं ABC user again. I want to configure password. यहाँ पे कोई भी password दे देते हैं, which is temporary password because you need to reset it on first login. ABC display name, ABC username, click create. Now our ABC user is ready to use. Open. Copy the user information. Right click, copy. Open incognito wizard and try to log in your Azure portal with the help of Active Directory user. Portal.azure.com. Paste your user detail. abc@ something .onmicrosoft.com. Next. Provide the temporary password. You must need to reset on first login. And sign. We are able to log in our Active Directory user with the help of over Azure portal, means Azure portal.azure.com. We are able to log in our AD user, but unfortunately इस यूजर की हेल्प से अभी हम कोई भी रिसोर्स नहीं परचेज कर सकते. इवन जो रिसोर्स अपने पास ऑलरेडी रूट के पास है भी, उस रिसोर्स को भी नहीं देखा जा सकता. लाइक एज वी क्रिएटेड अ मल्टीपल रिकवरी सर्विस वॉल्ट. यहाँ पे क्लिक करते हैं तो कोई भी रूट अकाउंट की सर्विसेज आपको नहीं मिलेगी. If you want to distribute the services, if you want to share the subscription that you have, so उस केस में RBAC service come into the picture. This is the first step. Second step, what we need to do to manage the user account. Second step हम क्या करने वाले हैं? We try to understand about the another option जिसकी help से हम user को configure करते हैं, like as a guest user account and bulk operations. So what do you think about the guest user account? Why we need to use it? Any idea? To give temporary access. Correct. कोई ऑलरेडी Azure का यूजर है जो ऑलरेडी Azure की सर्विसेज को इस्तेमाल कर रहा है और हम उसको राइट्स देना चाहते हैं, नॉट राइट्स, उसको इनविटेशन भेजना चाहते हैं ताकि हम अपने Azure की सर्विसेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें उस अकाउंट के साथ. सो दैट टाइम वी नीड टू प्रोसीड विद न्यू गेस्ट यूजर अकाउंट. करेक्ट. Yes, sir. What about the bulk user operation?
बल्क यूज़र ऑपरेशन, अगर आपको नए यूज़र क्रिएट करने हैं तो आप बहुत सारे नए यूज़र्स को इंडिविजुअली क्रिएट करने की जगह तुम एक साथ उन सबको क्रिएट कर दो। Cool. So in case of bulk user operation, what we need to do, just need to download one CSV file, right? Create करना है, delete करना है, invite करना है या download करना है। तो सभी के केस में आपको एक CSV फाइल का फॉर्मेट मिल जाएगा, like I'm just going to create a multiple user at a time. Click download and make a changes with your CSV file। यहाँ पे जो CSV फाइल हमारे पास डाउनलोड हुई है, इसमें हम कुछ चेंजेस करेंगे। चेंजेस करने के बाद सेम फाइल को हम अपलोड कर देंगे and we will get a multiple user on single click। So we successfully download our CSV file। Let me make a changes। So what I'm going to do, पहले हमने इस पे काफी सारे टेम्पलेट डाउनलोड कर रखे थे। Let me check। Fine, so इसी को हम यूज कर लेते हैं like as this one is old multiple files। Okay, fine, so this is our template। what we need to do, इसको हम ऐड करते जाते हैं। like I'm planning to create a 3 different user। test 1 के नाम से एक बना देते हैं, test 2 के नाम से बना देते हैं, test 3 के नाम से बना देते हैं, test। I want to create 4 different user on single click। second option, you must need to provide the UPN। तो UPN कहाँ से मिलेगा? user principal name you need to copy from our Active Directory portal। go to the custom domain, select, this is our domain name, you need to copy the domain name। ये entire हमारा domain name है। copy, back to the on premises, type the domain username, test1 at the rate and domain name। copy for entire user। तो यहाँ पे test1 हो गया, this one is test2, test3, ठीक है। test1, test2, test3, test4, that's it। पासवर्ड आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं, like I'm going to proceed with cloud at 123।
and make sure it's no. I don't want to block it. That's it. File and create in CSV file. इसको हमें जो सेव करना है वो अगेन CSV फाइल में ही सेव करना है. I want to put it in desktop पे ही रख लेते हैं. Users bulk 80. थोड़ा सा यूनिक नेम, user bulk -80. बैक टू द एज्यूर पोर्टल अगेन. सेव करने के बाद और यहाँ पे हम यूजर्स पे जाते हैं. सेलेक्ट बल्क, क्रिएट, सेलेक्ट योर डेटा, मींस जो CSV फाइल हमने क्रिएट की है. सर्च योर फाइल यूजर्स बल्क 80, ये पहले नंबर पे है. सेलेक्ट योर डेटा, वी सक्सेसफुली अपलोडेड. इफ एवरीथिंग इज ओके, डोमेन नेम में अगर कोई प्रॉब्लम आए स्पेस वगैरह का तो हो सकता है प्रॉब्लम आ जाए. अदरवाइज यू विल गेट अ 4 डिफरेंट यूजर ऑन सिंगल क्लिक. बल्क के केस में क्लिक सब. भी सक्सेसफुली अपलोडेड. अभी तो कोई एरर नहीं है यहाँ. CSV फाइल फेल्ड. एक्चुअली इसमें यही होता है जब हम ऑन माइक्रोसॉफ्ट का यूज करते हैं डोमेन, तो ज्यादातर ये एरर दिखाई पड़ जाता है. on microsoft.com. Let me verify the @1.24 outlook 045.on microsoft.com. Outlook 045. Let me show you in another account. Microsoft Office 365 के अकाउंट में सेम ही प्रोसीजर है, सेम ही AD है. एक्चुअली यहाँ पे इस अकाउंट में मैंने अपना कस्टम डोमेन ऐड कर रखा है. Okay. सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, बट डोमेन का पंगा पड़ रहा है. तो लेट मी ओपन Azure AD.
ओके, लेट मी शो यू। पहले तो वेरीफाई कर लेते हैं कि कस्टम डोमेन जो हमने ऐड किया था, which is I think cloudkaksa.in, आई डोंट नो कि कहाँ पे हमने उसको ऐड कर दिया है। Let me add the same domain name that we purchased from godaddy.com. I want to add with our Azure portal. We need to remove the entire records, जो पुराने records हैं उनको delete कर देते हैं। बस 2 record की requirement पड़ेगी यहाँ पे to authorize our domain with Azure Active Directory Services. Just need to remove that. We successfully deleted the entire record. Back to the Azure portal, go to the Active Directory Services, select custom domain, click add custom domain, type the domain name that you have, cloudkaksa.in. That's it, cloudkaksa.in. Provide the txt record, add, select txt record, add the rate, paste the value, default. That we have already discussed in case of application services की custom domain कैसे add किया जाता है. Second record, we also need to provide the MX for the mailing services in future. Copy. Provide the priority. Add. And click on verify. Okay, so our domain is associated with Teach Me Cloud 52. Let me log in it and remove it from our existing Office 365. Teach Me Cloud 552.onmicrosoft.com.
our domain is associated with another user account. Let me remove it. Mark as a primary. Still is in progress. So once our domain delete from another account, then we'll try to connect it on our user portal. चलो अब ट्राई करते हैं एक बार फिर से. Now it's approved. Cloud Kaksa.in. What we need to do, जो changes हमने अपने system में किए थे, means जो file में changes किए थे ना, बस इसमें हमें domain ऐड कर देना है. That's it. Edit में जाकर के @cloudkaksa.in सभी में ऐड कर दें. Save it again. Desktop users to 80. Back to the Azure portal and try to upload it again. Same procedure है. Users पे चलेंगे. Select bulk operations. And in the bulk creation, we need to upload the same data.
let's try to upload it again. Successfully uploaded. एक बार इसको क्लोज करके रिफ्रेश करके देख लेते हैं. We are able to find test 1, test 2 जितने भी यूजर्स थे हमने अपलोड किए थे. वो डोमेन का इशू हो गया था या फिर आई थिंक आई एम यूजिंग ओल्ड टेम्पलेट, जो पुराना टेम्पलेट था उसी का हमने इस्तेमाल कर लिया. दैट्स व्हाई वो एरर आ रहा था बार बार. ठीक है. यहाँ पे एनी क्वेश्चन? चलिए हमें आकाश. Yes, sir, I can hear you. No questions. ये हो गया बल्क यूजर ऑपरेशंस. ऐसे ही बल्क डिलीट भी होता है. बल्क डिलीट भी सेम ही तरीके से perform करते हैं. ठीक है. As per the agenda, and we are also responsible to manage the group. इसमें हमने बल्क देख लिया. गेस्ट यूजर अकाउंट यू नो अबाउट इट, एंड अबाउट द मैनेज यूजर एंड ग्रुप्स को भी क्रिएट करके देख लेते हैं. Question is that why we need to use the multiple groups. So group क्या है? It's a type of container which is responsible to contain our multiple users. तो अलग अलग users हैं, उन users को स्टोर करके एक पर्टिकुलर ग्रुप में रख सकते हैं. This is the actual use. Like as over Azure portal, we have option to select group. And although a number of groups are already available, ये built-in group कहलाएंगे, but I'm going to create my own group, which is categorized in two different parts: security and Office 365, Microsoft 365. If you want to create your group for the purpose of sharing policy and permission, तब हम security का इस्तेमाल करेंगे. अगर आप ये ग्रुप यूज करना चाहते हैं टू शेयर योर यूजर फ्रॉम ऑफिस एजूर पोर्टल टू ऑफिस 365, तो इन दिस केस यू नीड टू प्रोसीड विद दिस वन. सिंपल सा ग्रुप का नेम दे देते हैं, एनी नेम लाइक एज अ क्लास एज्यूर. दिस इज आवर ग्रुप नेम. नो नीड टू डू एनीथिंग. वी हैव अ टू डिफरेंट ऑप्शन. यू वांट टू मेक इट ऑनर, किसी यूजर को अगर ऑनर बनाना है तो वो हम मैनेज कर सकते हैं. अनदर ऑप्शन इज रिलेटेड टू द मेंबर्स. So I'm just going to add our members. अभी हमने थोड़ी देर पहले कुछ users create किए हैं like test 1, test 2, test 3. So I'm just going to add test 1 and test 2. ठीक है. 3 यूजर इसमें हमने ऐड कर दिया. We just need to select the benefit of groups. Now it gives us an option to provide the licenses. अगर हमें कोई लाइसेंस प्रोवाइड करना है, एडी का लाइसेंस प्रोवाइड करना है, SSPR कॉन्फ़िगर करना है, तो वो पर्टिकुलर जो सर्विस है SSPR की या एडी लाइसेंस की, वो इंडिविजुअल ग्रुप पे असाइन करते ही इन तीनों यूजर के लिए अप्लीकेबल हो जाएगी.
how we can manage it. Click on licenses. अभी अपने पास कौन सा लाइसेंस है वो वेरीफाई कर लेते हैं ऑल प्रोडक्ट्स पे जा करके. वी हैव अ 2 डिफरेंट लाइसेंस. अभी कोई भी असाइन नहीं है. एक पावर बीआई का है और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का लाइसेंस है. पावर बीआई का लाइसेंस असाइन करके देख लेते हैं. सेलेक्ट, क्लिक असाइन. I don't want to use a particular user. I want to apply for the group जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया है. The group name is Azure. Sorry. I forget the group name. Class Azure. Select license. And I want to provide the Power BI license. Click assign. Click add. Select your group. Class Azure. It will take time. अभी ये highlight नहीं हुआ. Let me refresh the page. Okay, no problem. So just open the groups. Class Azure open कर लेते हैं. यहाँ से हम डायरेक्टली असाइन कर देते हैं लाइसेंस. Okay, sorry, it's not active with that, so we are unable to apply it. License हमारा जो है वो active नहीं है. We need to purchase, but we are able to just apply the license to the group और वो directly हर एक user में applicable हो जाएगा. Is it fine? Yes, sir. ठीक है. तो as it is, we are able to manage the SSPR, self service password reset और multi-factor authentication. तो ये अपने पास एक्टिविटी होगी रिलेटेड टू द Active Directory users. So next अगर हम बात करें तो इसमें है understand about the AD join and about the SSPR self service password reset इनके बारे में. Then we'll move ourselves to our back services and governance. ठीक है. These all are the topics that are remaining. उसके बाद फिर अपना last बचेगा part of some monitoring panel or AKS. So can we do it tomorrow? ठीक है सर. कितना बजे? शाम को मैं फ्री हूँ क्योंकि मेरी जो क्लास थी सिंपल लर्न की वो खत्म हो गई. तो शाम को 8 से 10 कर सकते हैं. 7
नहीं 7 से तो क्लास है, 8 से 10 कर सकते हैं, या 8:30 टू 10 ओ क्लॉक, 1.5 घंटे की क्लास कर, 1.5 घंटे की पर्सन, 8 to 10 8 to 10 years। tomorrow, no? Okay. ठीक है, और ये खत्म ठीक, करते हैं इस पर, ठीक है। ओके सर। तो सर रिकॉर्डिंग भेजना प्लीज। मैं शेयर कर दूँ।